5C. Now we will discuss exercise 5C. Formula used in the exercise a square minus b square is a square minus b square. दोनों क्वांटिटी स्क्वायर में होनी चाहिए. The first condition is both quantities should be in square form. Middle sign between them is negative. So first of all we have to write these two terms without square. ये a पे square है, ये b पे square है. Without square it can be a, it is a b. So first we have to add these both two terms should be added, and second we have subtracted a plus b and a minus b. So 25a square minus 9b square, first of all we convert into square. Condition क्या थी फॉर्मूले में? तो both quantity should be square and middle sign between them is negative. The middle sign is negative, so we have to this two numbers should be converted into square form. These two numbers should be converted into square form. It may be written as 5a square. 25 is square of 5. A already has the square, so it may be written as 5a whole square. 9, 3 into 3, it is a square of 3, and b also has the square, so it may be written as 3b whole square. So at the place of a is 5a, at the place of b 5b. With the help of the formula a square minus b square, a plus b, a minus b, we have to compare with the formula. At the place of a 5a, on comparing the standard form of the formula with the question, we see that at the place of a is 5a, at the place of b 3b. Now we have to put the given question in form of right hand form. A plus b in right hand, and a minus b, 5a plus 3b, 5a minus 3b. मैं last fourth or fifth में I had also discussed about that. If the question given in the form of left hand side, so answer will be in form of right hand side. The question given left hand side form, so answer will be in form of. So question given in the form of left hand side, so we have to write right hand side. First we have to compare the question with the standard form of formula. Standard form is a square, but here is 5a square. So at the place of a is 5a. Standard form is b square, here is 3b square. So at the place of b, 3b. So we have to write the question given in left hand side. So we have to write the answer in right hand side form, a plus b, a minus b. So 5a plus 3b, 5a minus 3. Question number 8, 9 a minus 2 whole square, 16 a minus 2 whole square. A minus 2 contain square, but 9 does not contain square, but we can write as 3 square, so it can be written as 3 square a minus 2 square. 16 written as the 4 square, so it convert into 4a plus 2 whole square. Comparing with the formula, a square minus b square, at the place of a 3a minus 2, so now we open the bracket, 3a minus 6, open the bracket, second part 4a plus 8. Now comparing with the formula, at the place of a 3a minus 6, at the place of b 4a plus 8. Now we have to write in the form of a plus b, at the place of a 3a minus 6 plus b 4a plus 8. वैन भी माइनस, जब हम माइनस करते हैं तो सेकंड ब्रैकेट का साइन चेंज होगा, प्लस में साइन चेंज नहीं होता. वैन भी माइनस दीज टू टर्म, the sign of the second bracket should be changed because the minus sign change the all sign of the bracket. So 3a minus 6, so sign change होंगे, so 4a convert into minus 4a, plus 8 convert into minus 8. 3a plus 4a 7a, 8 minus 6 2, 3a minus 4a minus a, minus 8 minus 8 minus 6 minus 14, minus taken as common 7a plus 2 and a plus 14. Now question number 19, a4, it may be written as a square, 1 written as a. 1 at the place of a square, at the place of b 1. So we have to write a plus 1, a square plus 1, a square minus 1. The formula contain negative sign, this also contain negative sign, so 1 may be written as 1 square. Again apply the formula at the place of a at the place of b 1, a plus 1, a minus 1. It is the required answer. 9a square plus 3a minus 8b 64b. ये 9a square may be written as 3a whole square, 64b may be written as 8b whole square. So it may be written as a square minus b square, a plus b, at the place of a 3a, at the place of b 8b.
So a plus b, 3a plus 8b, a minus b, 3a minus 8b. Now 1 taken as the common, 3a minus 8b, 3a minus 8b. Now we have to take in 3a plus 3a minus 8b. Now we have to take in 3a minus 8b h common. So 3a minus 8b cancel. Answer is 3a plus 8b remaining. जब when we divided by the common factor, तो 3a minus 8b, 3 minus 8b cancel, 3a plus 8b and plus 1. It is your required answer. Now we will discuss the question number 19. 4x square 12ax minus y square minus yz square minus 2yz 9 square. This term contain a and x. तो अब हम क्या करेंगे? Now we equate all the term which in the form of x or a. So this may be written as 2x whole square and 9a square may be written as 3a whole square. It is a square, it is a b square. Now we will try to find out the 2ab. क्या a square plus b square given है? Now we have to find कि क्या 2ab भी given है. Now we will try to find out कि 2ab also given or not. So we have to write in the form of 2ab, 2 at the place of a, 2x at the place of b, 3a. So when we multiply these three terms, 2 2 जा 4, x a 12ax already given है, तो हम इस 12ax को इस फॉर्म में लिख दिया 2 into 2x into 3a. तो it is a square. रफली हम पहले चेक कर लेते हैं क्या 2ab. It is a 2x whole square. It is a 3 whole square because it is contain a and x. तो ax और a वाले टर्म को हम एक ग्रुप में इक्वेट कर लेंगे. सो 2x का होल स्क्वायर, 3a स्क्वायर होल स्क्वायर. रफली हम चेक करेंगे क्या 2ab की फॉर्म गिवन है 2. सो चेक करते हैं तो 2 एट द प्लेस ऑफ a, 2x एट द प्लेस ऑफ 3a. तो 2 2 जा 4, 3 जा 12ax, 12ax गिवन है. सो 12ax को हम इस फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे 2 into 2x into 3a. We can write it 12ax 2 into 2x into 3a. So ये हो जाएगा it convert into a square plus b square minus 2ab. तो a minus b whole square. Now minus taken as the common in between minus y square contain minus z square contain minus 2yz to contain minus taken as common. So it convert into y square plus z square plus 2yz. It is a formula of y plus z whole square. It is a square, it is a b square. On adding a plus b, 2x minus 3a at the place of a, at the place of b, y plus z. A minus b at the place of a, x minus 3 at the place of b, y plus z. So जब माइनस करेंगे तो साइन विल बी चेंज, माइनस y एंड माइनस z. माइनस में आपको थोड़ा सा प्रिकॉशनली इस प्रिकॉशन रखना है कि साइन उसका चेंज होना ही होना चाहिए. सेकेंड ब्रैकेट का साइन चेंज हो गई होगा. Now we will discuss the question number 21, x square, x to the power 4, x square plus 1. This x to the power 4 will be converted into x square whole square. So ये आपका at the place of a हो गया आपका x square at the place of a. At the so it is a x4, it is the at the place of a, so it is a square. अगर ये a स्क्वायर हो गया तो एट द प्लेस ऑफ a हो जाएगा x स्क्वायर. तो ये हो जाएगा 2ab की फॉर्म पे, मतलब 2ab की फॉर्म पे इसकी हाफ पावर होती है. तो यहाँ पे हाफ x पे क्या है, अंदर जो ब्रैकेट में होता है वो एट द प्लेस ऑफ a होता है. तो 2ab में आपका a को कंटेन करता है, 2ab कंटेन a. सो x4 में भी रिटर्न है x स्क्वायर होल स्क्वायर. सो हियर इज x स्क्वायर. सो इससे सिंपली आपको पता चल गया कि ये 2ab की फॉर्म है क्योंकि a x स्क्वायर है और 2ab में a होता है, तो ये 2ab की फॉर्म है. तो अब हम इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर और 1 को लिखेंगे 1 का स्क्वायर. अब हम इसको चेंज करेंगे a प्लस बी के होल स्क्वायर या a माइनस बी के होल स्क्वायर में. तो ये हो गया आपका a स्क्वायर और ये हो गया b स्क्वायर. नाउ वी हैव टू चेक दैट कि व्हाट इज द कि 2ab के प्लेस पे क्या होगा. व्हाट शुड बी कम एट द प्लेस ऑफ 2ab. It is a x square whole square. It is a square at the place of a is x square. Here is x square. It is जो a होता है वही यहाँ अगर आ गया तो ये समझ जाइए इट इज़ ए फॉर्म ऑफ 2ab. तो हमें सिंपली इंडिकेट हो गया कि x स्क्वायर इज ए फॉर्म ऑफ 2ab एंड इट इज़ ए b स्क्वायर. अब नाउ वी हैव टू फाइंड आउट दैट कि व्हाट शुड बी कम एट द प्लेस ऑफ 2ab. सो रफली हम चेक करते हैं, वी हैव टू चेक रफली एट द व्हाट शुड बी कम एट द प्लेस ऑफ 2ab. 2 एट द प्लेस ऑफ a
x square, at the place of b 1. So at the place of 2ab will become 2x square, but here is only x square, b required 2x square. तो हमें कितने x square की रिक्वायरमेंट है? b required another x square, क्योंकि हमें यहाँ कितने x square चाहिए? 2. b required here 2x square, but given here is only 1x square, so we required another x square to convert into whole square form. To convert into whole square form we have to require 2x square. तो 2x स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए हम इसमें एक एक्स स्क्वायर की और रिक्वायरमेंट है. सो वी हैव टू एडेड एक्स स्क्वायर एंड सब्ट्रैक्टेड एक्स स्क्वायर. जितना हम ऐड करते हैं उतना सब्ट्रैक्ट करते हैं, बिकॉज कि ओरिजिनल फॉर्म क्वेश्चन की चेंज ना हो, जिससे ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ओरिजिनल फॉर्म पे कोई इफेक्ट नहीं है. तो ये हो गया एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर. एक्स स्क्वायर मे बी रिटन एज 2x स्क्वायर एंड 1 स्क्वायर, इट मे बी रिटन एज एक्स होल स्क्वायर. ये हो गया आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हो गया आपका 2ab, 2x स्क्वायर इंटू 1 2ab. सो इट कन्वर्ट इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab a प्लस बी होल स्क्वायर. ये हो गया एक्स होल स्क्वायर. नाउ एट द प्लेस ऑफ ए इज x square plus 1, at the place of b is x, so it is a form of a square minus b square. We have to write a plus b, a minus b. At the place of b a, put x square plus 1. We have to put at the place of b x. A at the place of a is x square plus 1, minus b at the place of b is minus x. Now question number 22, a square plus b square minus 4c square whole square 4a square b square. 4a square plus b square minus 4c square whole square, it may be written as 2ab whole square. It is at the place of a, it is a place of b. So it is a square minus b square. A square minus b square की form है. So we have to write a plus b, a minus b, a at the place of a plus b. So we have to write at the place of a square plus b square minus 4c square plus b. We have to write at the place of b 2ab. A at the a minus b at the place of b have to write a square plus b square minus 4c square. At the place of b have minus b, so b have minus at the place of b have to write at the place of b 2ab. A square plus b square plus 2ab, it is a formula of a plus b whole square. This minus 4c square write as 2c whole square. It is a place of a, it is a place of b. A at the place of a is a plus b at the place of b we have to put c. A minus b at the place of b, a we have to put a plus b at the place of b 2c. In second bracket sorry, a square plus b square minus 4c square minus 2ab, a square plus b square minus 2ab ये अंडरलाइन किया. इट इज़ ए फॉर्म ऑफ a माइनस बी होल स्क्वायर. ये इंडिकेट किया है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab स्क्वायर. 2ab ये फॉर्म हो गई a माइनस बी का होल स्क्वायर. माइनस 4c स्क्वायर वी हैव टू राइट माइनस 2c स्क्वायर. So it is also convert into a square minus b square. So we have to write a plus b and a minus b. At the place of a we have to write a minus b plus b. At the place of b we have to write 2c. A minus b at the place of a minus b. At the place of c minus 2c. Discuss the question number 27. 27 is x square plus 1 upon x square minus 11. We have to write here a square 1 upon a square. A square at the x convert into x whole square. 1 upon x may be written as 1 upon x square. ये आ गया आपका at the place of a square. ये हो गया आपका at the place of b square. अब आपको a square plus b square already given है, तो आपको 2ab भी होना चाहिए. क्या होना चाहिए? 2ab. So we have to find out कि what should we come at the place of 2ab. So roughly we have to check at the place of what should we come at the place of 2ab. At the place of a is x. At the place of b 1 upon x. X and x cancel. 2. So 2 should be come at the place of 2ab. So 11 may be written as minus 2 and minus 9. Minus 2 and minus 9. It is a square, it is a b square. हमने अभी ऑलरेडी चेक किया है 2ab की प्लेस पे क्या आना चाहिए? माइनस 2. सो ये हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab. सो वी हैव टू राइट a माइनस b whole square and it may be written as 3 square. So first of all a plus b at the place of a x minus 1 upon x, at the place of b
3 a minus b at the place of a x minus 1 upon x at the place of b minus 3। फिर से समझ लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, टू क्वांटिटी ऑलरेडी आपको स्क्वायर में दी है, वो भी सम ऑफ स्क्वायर में। ए प्लस बी होल स्क्वायर एंड ए माइनस बी होल स्क्वायर बोथ फार्मूला कंटेन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो इट शुड बी कन्वर्ट इनटू ए प्लस बी होल स्क्वायर और ए माइनस बी होल स्क्वायर। सो फर्स्ट नंबर मे बी रिटन एज एक्स होल स्क्वायर, सो कन्वर्ट इनटू ए स्क्वायर। इट मे बी रिटन एज 1 अपॉन एक्स होल स्क्वायर, इट कन्वर्ट इनटू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब आपको चेक करना है कि आपको गिवन में कि 2ab गिवन है या माइनस 2ab। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सी दैट कि what should be come at the place of 2ab. To check that कि what should be come at the 2ab, we roughly here write 2ab. 2 at the place of ab is x, at the place of a is x, at the place of b is 1 upon x, x and x cancel, so at the place of 2ab comes 2. So it may be plus 2, it may be minus 2, but here is given in form of negative, so it may minus 11, we have to write minus 2 and minus 9. This one convert is a square plus b square, 2ab क्या था minus 2, so it is a 2ab, तो ये हो गया आपका a minus b whole square। this minus 9 may be written as 3a square, ये हो गया a square, ये हो गया आपका b square। Now we have to write in the form of a plus b, a minus b, a x minus 1 upon x plus b 3, a x minus 1 upon x minus b 3। You have to do exercise, हो गया, thank you। Now we will now you can do the exercise 5c, please do it and please send thank you and send the doubt by the on Google Class।